और पहचान का प्रतीक है। इसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। राष्ट्रगान जन गण मन भारत के जन जन की भावना, विविधता और एकता के सूत्र में बांध कर रखता है। सभी अतिथिगण एवं आयोजकों से विनम्र प्रार्थना है, एक ताल और स्वर लय में आत्मगौरव और मातृभूमि के प्रति समर्पण को दोहराए। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। दिमाखाची आणि सन्मानाची परिपूर्ण झालर लाभिल्ले हे समारोहात आतिथ्याची एक औपचारिक देख मागता
गोंय विधानसभेचे माननीय सभापती महोदय डॉक्टर गणेश गांवकरजी हांचे कडेन तांणी वेदी वेल्या मानेस्तांक येवकाराचो भोवमान भेटोवचो. गोवा के सम्माननीय राज्यपाल श्रीमान पुसापति अशोक गजपति राजू जी का हार्दिक स्वागत अभिवादन. गोवा विधानसभा के माननीय सभापति महोदय डॉक्टर गणेश गांवकर जी से नम्र निवेदन है गोवा राज्य के राज्यपाल श्रीमान पुसापति अशोक गजपति राजू जी का सम्मान भेंट देकर करें. इस सम्मेलन में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवा विधायकों की भूमिका और व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण और तटीय संपर्क में जोन 7 की प्राथमिकताएं, इन 2 मुद्दों पर चर्चा सत्रों का आयोजन हुआ. इस सम्मेलन में संसदीय सहयोग को मजबूत करने, अच्छे अनुभवों का आदान प्रदान करने और क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. आपकी सुदृढ़ प्रतिक्रिया से यह ज्ञात है कि गोवा ने आतिथ्य के पूर्ण भाव से अपना कर्तव्य निभाया है. इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए विनम्र भाव से गोवा विधानसभा के माननीय सभापति डॉक्टर गणेश गांवकर जी से अनुरोध है, आप सभा को संबोधित करें. सगळ्यांक नमस्कार. ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोक सभा एंड चेयरपर्सन ऑफ द सीपीए इंडिया रीजन श्री ओम बिरला जी, Honorable Deputy Speaker of Goa Legislative Assembly, Sri Joshua D'Souza ji, distinguished members of Parliament, Honorable members of State Legislature and delegates from Goa and Maharashtra, secretaries and senior legislative officers of Parliament and the participating state legislature, officers of the Commonwealth Parliamentary Association India region, distinguished invitees from the Government of Goa, members of the media, ladies and gentlemen. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, as we come to the end of our successful discussions, we have reached the most important part of our program, the valedictory function of the annual conference of Zone 7, CPA India region. It is a great honor to welcome our chief guest, His Excellency the Governor of Goa, Sri Pusapati Ashok Gajapati Raju ji. Sir, Your Excellency, your long career in public service and your deep knowledge of lawmaking bring great value to this gathering. We are truly honored to have you lead this closing ceremony. Your presence is the perfect way to conclude this conference, and we thank you, sir, for your time. In the same spirit, we are very happy to welcome the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Sri Om Birla ji. Sir, your strong leadership of the world's largest democracy is an inspiration to all of us. We are lucky to have your guidance here today. As the chairperson of the CPA India region,
You have worked hard to bring our nation's many regions closer together. By being here in Goa today, you send a powerful message that the legislature of the Western Zone are highly valued and supported at the highest level. We are truly grateful to both our dignitaries for joining us to mark the successful close of the Zone 7 conference. It is with deep sense of satisfaction and gratitude that I share a few concluding reflections at this valedictory session of the Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 7 Conference. Over the past 2 days, this conference has provided a meaningful platform for thoughtful deliberations, exchange of ideas, and the strengthening of parliamentary and legislative cooperation among our institutions. The discussions held during this conference have been timely, relevant, and forward-looking. Our first plenary on the role of young legislators in achieving the goal of developed India by 2047 brought out several important perspectives on how legislative institutions can support and guide the next generation of public representatives. I am sure that the emphasis on orientation programs, legislative research, support, committee participation, and interstate dialogue among young legislators will contribute meaningfully to the larger national vision of Viksit Bharat 2047. The deliberations have clearly reaffirmed that the strength of our democracy lies in the preparedness, commitment, and vision of those who will lead our institutions in the years to come. Our second plenary on priorities of Zone 7 in trade, tourism, urbanization, environment, and coastal connectivity was equally significant. The discussions highlighted the strategic importance of our Western Zone comprising of Goa, Gujarat, and Maharashtra, the shared concern and common opportunities in the area of trade, tourism, infrastructure, ecological responsibility, and coastal connectivity have underlined the need for continued legislative cooperation among our states. The spirit of cooperative federalism reflected in these deliberations has indeed been one of the most valuable outcomes of this conference. The conference has once again reminded us that legislatures are not merely forum of passing laws. They are living democratic institutions where the voice of the people finds constitutional expression, where governance is revived, and where public policy is shaped through informed debate. The strength of our parliamentary democracy depends greatly on the quality of our legislative deliberations. When presiding officers, members, and legislative officers come together in a forum such as this, the benefits extend far beyond these 2 days. Such an interaction strengthens institutions, improve legislative practices, and deepen mutual learnings. For the Goa Legislative Assembly, it has been a matter of great honor and privilege to host this distinguished conference. As the host legislature, we take immense pride in our democratic traditions, our commitment to meaningful legislative and parliamentary dialogue, and our role in bringing together presiding officers, members, and legislative officers from across the country. It has been our earnest endeavor to ensure that the conference reflected both the dignity and our institutions and the warmth and hospitality for which Goa. I trust that every delegate will carry back not only fond memories of Goa, but also valuable legislative insights and meaningful institutional learnings from these deliberations. I offer my respectful gratitude to the Honorable Governor of Goa, Sri Pushapati Ashok Gajapati Rajuji, for kindly gracing this valedictory session with His Excellency's august presence. I convey my deep appreciation to the Honorable Speaker Lok Sabha and Chairperson of the CPA India region, Sri Om Billaji, for this gracious presence and
continued leadership of the CPA India region. I wish to place on record my sincere gratitude to the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, for his generous support extended by the Government of Goa towards the successful conduct of this conference. I further extend my sincere thanks to all the Honorable Presiding Officers from the participating legislatures and to the distinguished delegates and Honorable Members whose valuable participation has enriched the deliberation of this conference. I also acknowledge with appreciation the dedicated efforts of the secretaries, senior legislative officers, protocol teams, and all members of the organizing staff who worked tirelessly to ensure the smooth conduct of this conference. I wish to place on record my deep appreciation for Dr. Kandavelu, Chief Secretary of Goa, Sri Anjani Kumar, Joint Secretary, and Dr. Yumna Arun Kumar, Director, Conference and Protocol, Lok Sabha Secretary, whose meticulous guidance ensured the smooth conduct of the conference. I extend my gratitude to Srimati Meghna Talekar, Secretary, Maharashtra Legislative Assembly, and Srimati Namrata Ulman, Secretary, Goa Legislative Assembly, together with their dedicated teams whose commitment and precision contributed immensely to its success. As we come to the close of these deliberations, let us carry forward the spirit of dialogue, cooperation, and constitutional responsibility that has guided our discussion over the past 2 days. As the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has often reminded us, through the guiding principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, our collective progress must be anchored in cooperation, inclusion, and shared national purpose. The spirit finds true reflection in the deliberations of this conference. May the ideas of perspectives shared here translate into stronger legislative institutions, better governance, and a renewed commitment to parliamentary democracy. I once again thank all the distinguished dignitaries and delegates for their valuable participation and contribution. I now respectfully invite the proceedings of this valedictory session to continue. Jai Hind, Jai Goa. Thank you. आदर भाव से धन्यवाद। पिछले 2 दिन से राष्ट्रमंडल संसदीय संघ पश्चिम क्षेत्र जोन 7 में इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी की सम्मानजनक, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली उपस्थिति से विविध सभाएं गौरवान्वित हैं। आपकी प्रतिष्ठित अभिव्यक्ति और आदरणीय जननेता की भूमिका सभी को प्रेरित करती है। सम्मान भाव से इस समापन सभा को संबोधित करने के लिए आपसे विनम्र प्रार्थना है। सीपीए जोन 7 के समापन समारोह में गोवा के महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय अशोक गजपति राजू जी, मैं आपका इस सीपीए जोन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। महामहिम अशोक गजपति राजू जी का एक लंबा संसदीय अनुभव है। आपका राज्य विधानसभा के अंदर राज्य के मंत्री के रूप में, संसद का आपका अनुभव केंद्रीय मंत्री के रूप में, एक लंबा संसदीय अनुभव का लाभ हम सबको आज आपके मार्गदर्शन से मिलेगा। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के अंदर हमारे 31 माननीय सदस्यों ने विचार रखे,
अपने अनुभव साझा किए, अपने अपने दृष्टिकोण भी रखे और एक दूसरे से सीखने और सिखाने का अनुभव भी प्राप्त किया। क्योंकि ये गोवा की धरती पर हो रहा है, गोवा का शांत समुद्र लेकिन जीवंत, यहां के उगता हुआ सूरज जिसकी ऊर्जा, निश्चित रूप से ये पहला अधिवेशन ऐतिहासिक भी है, निर्णायक भी है और नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प भी है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा विधायकों ने दोनों विषय महत्वपूर्ण है, 2047 में युवा विधायकों की भूमिका, क्योंकि ये तीनों प्रदेश, माननीय राज्यपाल महोदय, हमने पूरे भारत सीपीए जोन को 7 राज्यों में बांटा है। इन 7 राज्यों के अंदर हमारे विधायक जनप्रति समय समय पर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और इस सम्मेलन में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के माननीय सदस्य यहां पर आए हैं। यहां पर कर्नाटक के महामहिम स्पीकर आए जो विशेष अतिथि के रूप में आए, हरियाणा के स्पीकर आए, आंध्र प्रदेश के स्पीकर आए हैं, ये सभी विशेष अतिथि के रूप में भी आए हैं। इस तरीके से सीपीए जोन के अंदर जो चर्चा, संवाद की परंपरा के माध्यम से हम भविष्य की रूपरेखा भी तय करते हैं और हम हमारी विधानसभाओं के अंदर जिन विषयों पर चर्चा हुई, संवाद हुआ, उन अनुभवों को, नवाचारों को अपनी अपनी विधानसभा के अंदर भी और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लक्ष्य से हम जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय हमारे युवा विधायक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जहां उनका निरंतर जनता से संवाद बढ़ा है, जनता से पहुंच वहां बनी है, वहीं लोगों की जन भागीदारी अधिकतम हो। जनता की जितनी भागीदारी निर्णयों, फैसलों, नीतियों, कानून में बनाने होती है, उतने ही सारगर्भित परिणाम आते हैं। और इसीलिए जहां विधायकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, वहां उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर और राज्य विधानसभाओं के अंदर भी जो 2 दिन तक इस सम्मेलन में जो अनुभव, नवाचार प्राप्त किए, उसके आधार पर 2047 तक हम विकसित भारत के इस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। दूसरा विषय भी महत्वपूर्ण है, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और उसके साथ पर्यावरण और तटीय क्षेत्र की चुनौतियां हैं। क्योंकि ये तीनों राज्य तटीय क्षेत्र पर आते हैं। किसी समय समुद्र के तटीय क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चुनौतियां थी, प्राकृतिक आपदाओं का भी संकट था, लेकिन आज इन तीनों राज्यों ने अपने तटीय आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। जहां दुनिया से व्यापार बनाने का काम किया, दुनिया का प्रवेश द्वार बनाया, वहां पर ही उन्होंने नील क्रांति के रूप में उन्होंने वहां के अंदर लोगों को रोजगार देना, रोजगार के साथ वहां के उद्योग, व्यापार, इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देना, लेकिन उसके साथ पर्यावरण संतुलन को भी रखना। इन तीनों विषयों के साथ पर्यटन, आज गोवा दुनिया का सबसे ज्यादा पर्यटन के रूप में आकर्षित राज्य है। देश और दुनिया के पर्यटक यहां पर आते हैं और जिस आतिथ्य भाव से
गोवा के लोग वहां पर गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से मैं गोवा को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। गुजरात ने अपने पर्यटन के क्षेत्र में नई प्रगति की। ये महाराष्ट्र जो आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, आज पर्यटन के रूप में विकास किया। इसलिए तीनों राज्यों के अंदर हमारे विधायकों ने इन अवसर और चुनौतियों के बीच में हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इन सारी चुनौतियों को अवसर में पलटें और पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से व्यापार उद्योग को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए भी विचारों को साझा करने का काम किया। मुझे आशा है ये विचार, उनके साझा दृष्टिकोण और विशेष रूप से औपचारिक अनौपचारिक चर्चाएं, जब हम औपचारिक बैठते हैं अनौपचारिक चर्चा भी होती और सब विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर जो उन्होंने नए नवाचार किए हैं, नए इनोवेशन किए, उनको भी उन्होंने साझा किया ताकि एक दूसरे विधायक को सीखने का अवसर मिलेगा। और इस बात की प्रतिस्पर्धा होगी कि मैं मेरे विधानसभाओं को चाहे विकसित भारत बनाने का संकल्प हो, चाहे व्यापार उद्योग ट्रेड पर्यटन पर्यावरण के अंदर किस तरीके से नवाचार कर अपने प्रदेश के अंदर नया परिवर्तन कर सकते हैं, उसके साथ साथ राज्य की नीतियां पॉलिसी कानून बनाकर और कौन से कानून जो केंद्र में बनने चाहिए, उसके लिए भी इस सीपीएन सम्मेलन में चर्चा संवाद होगी। मैं विशेष रूप से उन 31 माननीय सदस्यों को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब समय आ गया है, देश के अंदर नए परिवर्तन का दौर आ गया है। हमारी महिलाएं बड़ी संख्या में आए, लेकिन आने वाले समय के अंदर विधायी संस्थाओं के अंदर नीतियां पॉलिसी बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और देश ने पहली बार नई संसद भवन के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। अब समय आ गया है कि राज्य की विधानसभाएं हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत नगर पालिकाओं के कई राज्यों के अंदर 33% और कई राज्यों के अंदर 50% अभी भी आरक्षण है। आने वाले समय में पंचायत से लेकर दिल्ली की पंचायत तक विधायी संस्थाओं के अंदर महिलाओं की भागीदारी बने ताकि वह नीतियां बना सके, पॉलिसी बना सके। महिलाएं संवेदना से काम करती है, उनकी संवेदना हम सब जानते हैं। इसलिए जब विधायी संस्थाओं में उनकी भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से कानून बनाते समय उनके महिलाओं के हित को भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसलिए आने वाले समय के अंदर हम जहां देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र के अंदर नया दृष्टिकोण दे रहे हैं, हम पहले से ही दुनिया के वो देश हैं जहां संविधान बनने के समय ही सबको मत का अधिकार, ये दुनिया के अंदर भारत एक देश है जिसने संविधान बनते हुए सबको मत का अधिकार दिया और समय समय के अंदर जो जो परिवर्तन की आवश्यकता हुई उस परिवर्तन के लिए भी संविधान में संशोधन भी प्राप्त किए। अब आने वाले समय में आज की वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार जब हमारी देश की महिलाएं चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र के अंदर नेतृत्व कर रही है, तो नीतियां पॉलिसी बनाने में उनकी भागीदारी हो, इस संकल्प को भी हम पूरा करने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं पुनः सभी माननीय विधायकों को जिन्होंने इसमें भागीदारी निभाई उनको धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य के स्पीकर और विधान परिषद के सभी सभापतियों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से आज हमारे बीच में जिनको एक लंबा संसदीय अनुभव है उनका मार्गदर्शन मिलेगा, महामहिम का भी धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं गोवा के स्पीकर साहब को जिन्होंने जिस तरीके से यहां पर हमारे विधायकों को, हमारे प्रतिनिधियों की व्यवस्था की, एक अच्छा वातावरण दिया, अच्छी व्यवस्थाएं की और खुलकर चर्चा करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे डिप्टी स्पीकर और विशेष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं। मैं गोवा विधानसभा के सभी अधिकारी कर्मचारी, उनकी पूरी टीम को भी साधुवाद देता हूं और संसद के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने यहां पर सक्रिय भागीदारी गोवा विधानसभा के साथ निभाई, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी का महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
पुनः मैं आपको यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सम्मान भाव से प्रणाम। जोन 7 के गोवा में यह आयोजित यह प्रथम सम्मेलन पुनीत पावन गोवा को इतिहास के पन्नों पर यह हमेशा यह सम्मेलन दर्ज हो चुका है। यह संवाद, विचार और विमर्श की एक सूत्रता निश्चित रूप से भविष्य में उज्जवल स्वरूप धारण करेगी, यह अटूट विश्वास है। गोवा के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस सम्मेलन की शोभा और भी बढ़ गई है। We humbly request Your Excellency to kindly address the gathering. Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Speaker of the Goa Legislative Assembly, Dr. Ganesh Govankar ji, Honorable Deputy Speaker of the Goa Legislative Assembly, Shri Joshua Peter D'Souza ji, Secretary General of the Lok Sabha, Shri Utpal Kumar Singh ji, Honorable Speakers of Legislative Assemblies, Honorable Chairmen of Legislative Councils, Honorable Deputy Speakers of Legislative Assemblies, Honorable Deputy Chairmen of Legislative Councils, Honorable Members of Parliament, Members of State Legislature, Officers of the Lok Sabha, Raj Sabha, various legislative assemblies and Legislative Council, officers of state governments, distinguished guests, delegates, ladies and gentlemen. It is my privilege for me to join you this afternoon for the valedictory session of the Commonwealth Parliamentary Association, Indian Region Zone 7 Conference. Over the past 2 days, this conference has brought together distinguished presiding officers, legislators and parliamentary practitioners from across the western region of our country. I commend the Goa Legislative Assembly under the leadership of the Honorable Speaker, Dr. Ganesh Govankar ji, for hosting this conference with great warmth and exemplary organization. Goa, with its long tradition of dialogue, openness, and cultural exchange, provides an opportune setting for such a meaningful parliamentary gathering. The Commonwealth Parliamentary Association has for over a century served as a valuable platform for strengthening democratic institutions across the Commonwealth. By bringing together legislators and presiding officers, it enables the sharing of experiences, the exchange of best practices, and the deepening of parliamentary traditions. Conferences such as this reaffirm our collective commitment to democratic governance and responsible public leadership. The deliberations during this conference have been both timely and forward-looking. The first plenary session focused on the role of young legislators in achieving the goals of a developed India by 2047. As India moves towards the centenary of its independence, the vision of a developed nation calls for innovation, dynamism, and inclusiveness policy making. Young legislators represent the aspirations and energy of a new generation. Their participation in legislative process brings fresh perspectives and ideas that can help shape policies for a rapidly changing society. At the same time, the responsibility
of young legislators extend beyond enthusiasm and ambition. It involves upholding the dignity of legislative institutions, strengthening democratic discourse, and ensuring that government remains responsive to the needs of the people. The second plenary session deliberated on priorities of Zone 7 in trade, tourism, urbanization, environment, and coastal connectivity. These themes resonate deeply with the western region of India. Our states share vibrant coastal economies, dynamic trade networks, growing urban centers, and extraordinary tourism potential. The challenge before the policymakers is to harness these opportunities while ensuring environmental sustainability and balanced development. Legislators have a crucial role in shaping the policy framework that enables such progress. Through informed debate, legislative oversight, and constructive engagement with the executive, legislators help ensure that development remains both inclusive and sustainable. While the specific themes discussed in this conference are important, they also remind us of the broader and more enduring responsibility, the responsibility to strengthen parliamentary democracy. India's democratic institutions are among the most vibrant and resilient in the world. Our parliament and state legislators are not merely institutions for making laws. They are the primary forum through which the voice of the people finds expression. The framers of our Constitution placed immense faith in the power of deliberative democracy. Dr. B.R. Ambedkar emphasized that parliamentary democracy rests on the foundations of discussions, deliberation, and accountability. These principles continue to guide our democratic journey. For democracy to flourish, healthy debate within legislative bodies is essential. Differences of opinion are natural in a diverse democracy such as ours. Indeed, robust discussion and reasoned disagreements are signs of a healthy democratic system. What matters is that these debates are conducted with dignity, respect, and a shared commitment to the larger public good. Equally important is the uninterrupted functioning of our legislators. Legislative institutions must remain active forums of policy deliberation and public accountability. Frequent disruptions or limited sittings diminish the opportunity for meaningful debate and weaken the ability of legislators to perform their constitutional functions. In this context, it is important for all of us to reflect the two key aspects of legislative functioning. First, the number of working days of our legislators. Adequate sittings are essential to ensure that legislation, financial scrutiny, and public issues receive the attention they deserve. Second, the productivity and quality of deliberations within the House. The time available in legislators must be utilized effectively through informed participation, constructive debate, and serious consideration of issues affecting citizens. In this endeavor,
the role of the opposition is indispensable. In a parliamentary democracy, the opposition is not merely a political adversary. It is an integral component of the democratic framework. By questioning, scrutinizing, and offering alternative perspectives, the opposition strengthens the quality of governance and ensures accountability. Democracy thrives when governments and opposition alike uphold the spirit of constitutional responsibility and work together within the institutional framework of legislatures. Presiding officers also carry a special responsibility in safeguarding the dignity, decorum, and smooth functioning of the legislative institutions. Their impartial guidance ensures that debates remain orderly, productive, and focused on the public interest. The exchange of ideas that has taken place during this conference will undoubtedly contribute to strengthening legislative practices across the states represented here. By learning from one another's experiences, our legislators can continue to evolve and adapt to the needs of a rapidly changing society. Before I conclude, I would like to once again express my appreciation to all the distinguished delegates who have participated in this conference and enriched its deliberations. I also congratulate the organizers and the government of Goa for their effort in making this conference a success. Gatherings such as this reaffirm our shared commitment to the values that lie at the heart of parliamentary democracy: dialogue, cooperation, and respect for constitutional institutions. I am confident that the ideas and insights emerging from this conference will strengthen legislative functioning across our region and further deepen the democratic traditions that have long been the pride of our nation. With these words, I convey my best wishes to all the participants in this conference. Thank you. Jai Hind. महामहिम राज्यपाल माननीय श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू जी के प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक उद्बोधन ने हमारे चिंतन को एक नई दिशा दी है। आपके बहुमूल्य समय और स्नेहिल शब्दों के लिए हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट श्री जोशुआ पीटर डिसूजा, ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर, गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली, टू एक्सप्रेस वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। A very good evening, everybody. The Honorable Governor of Goa, Shri Pushapati Ashok Gajapati Rajuji, the Honorable Speaker of the Lok Sabha and the Chairperson of the CPA, the India region, Shri Om Birla ji, Honorable Speaker of the Goa Legislative Assembly, Dr. Ganesh Gaonkar ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, the Secretary General of the Lok Sabha, Mr. Utpal Kumar Singh ji, the Secretary of Goa Legislative Assembly, Madam Namrata Ulman ji, all the speakers of various Lok Sabhas, the Deputy Chairmen of the MLC of Maharashtra, all the MLAs that are present here, all the other MLCs, all the secretaries and all the staff of both Gujarat as well as Maharashtra legislative assemblies. It is an honor and privilege to be here to propose the vote of thanks as we draw curtains on this highly successful CPA West Zone 7 conference. Over the last 2 days, our beautiful state of Goa has been a vibrant forum for the exchange of ideas
as we witnessed an engaging discussion, insightful presentations, and a fruitful deliberations on the pressing challenges and evolving roles of our legislative bodies. The spirit of parliamentary democracy has truly been celebrated and strengthened within these walls. At the onset, I would like to express my sincere gratitude to the Honorable Governor of Goa, Shri Pushpati Ashok Gajapati Rajuji, for gracing this occasion and partaking wisdom, guidance, and direction in his address. We are deeply indebted. I extend my deepest gratitude to our Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla Ji. Sir, your presence here today and over the last 3 days, despite your extremely busy schedule, is a profound insight and renewed the sense of purpose. We thank you for your guiding work. I would like to express my sincere thanks to the Honorable Speaker of the Goa Legislative Assembly, Dr. Ganesh Gaonkar ji, for his visionary leadership and unwavering commitment to hosting such a prestigious conference here in Goa. Your guidance has been an anchor for this event's success. My heartfelt gratitude to our dynamic Chief Minister, Dr. Pramod Sawant ji, for his immense support and extending the Government of Goa. Your administration's proactive assistance assured that this conference was executed flawlessly. I would like to express my sincere gratitude to both the secretaries of the Lok Sabha as well as the Goa Legislative Assembly, and most importantly, the presiding officer, Dr. Neelam Gore, who has been outstanding and making sure that she attended and listened to each and every one of us as a presiding officer. Thank you, Madam. An event of this scale is never the work of one person, like we always say, but a accumulation of tireless teamwork. I place on record our sincere appreciation for the CPA Secretariat for their constant coordination and procedural guidance. I commend the Secretary of the Goa Legislative Assembly, Madam Secretary Namrata Ulmanji, and the entire staff of the Goa Legislative Assembly. You have worked day and night behind the scenes to ensure every logistical challenge was dealt and managed with precision. I would also like to extend a deep thanks to the State Protocol Department, the Goa Police, and the security personnel for ensuring a safe and smooth environment to all our dignitaries. To the catering and hospitality teams of the Goa Marriott and various other supporting caterers, thank you for giving our guests a true taste of Goan hospitality. And to our friends in the media, thank you for taking the message and the submissive work of this conference to the citizens we serve. As we conclude, I hope that the dialogue that we initiated here will translate into a stronger legislative practice in our respective assemblies. As John F. Kennedy once said, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not in utter words, but to live by them. Let us carry forward the idea and the resolution from the conference and live by them in our service to our people. In Goa, we believe deeply in a philosophy of Atiti Deo Bhava. The guest is equivalent to God. We hope you have enjoyed our hospitality, our culture, and our scenic beauty of our beautiful state. As you prepare to return to your respective constituencies, I wish you all the very best and a safe and pleasant journey towards home. Please take back with you a fond memory of Goa, and we look forward to welcoming all of you again. On behalf of the Honorable Speaker, the members, and the entire staff of the Goa Legislative Assembly, I would like to thank all of you all once again for making this conference extremely successful. May the deliberations of these past days inspire better laws, better governance, and a better life for the people that we are all privileged to serve. Jai Hind, Jai Gomantak, Jai Loktantra. राष्ट्रगान की गूंज से समापन समारोह का समापन। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब
सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे